Perfect. Okay, guys, welcome to a free webinar on SSB Services Selection Board. Let's break first all your myths. मैं कौन हूँ क्या हूँ ये तो आप लोग जानते ही होंगे, but in short, I represent Integrated SSB Virtuosos, a unit of CS Joint Services Academy. नाम लेफ्टिनेंट कमांडर निखिल कुमार चंद्रकला, द GTO. जिन्होंने नहीं सुना है आज पहली बार सुन रहे होंगे. सो वेलकम टू दिस वेबिनार. तो आज हम ये सब चीजें देखेंगे. We'll break most myths about SSB today, and I'll also have a question and answer section in between. And what exactly do we do at the integrated SSB Virtuosos? Okay. Now, my name is Lieutenant Commander Nikhil Kumar Chandrakala. I'm a DIPR certified group testing officer. I was commissioning group of Services Selection Board Kolkata, and I'm ex-fil SSB Bangalore. I hold a master's in psychology, and I have assessed 12,500 candidates, more than that, in fact. Stage 1, Stage 2 sub, mila karke in my career as a GTO. Fortunately, unfortunately, I am the youngest group testing officer of India to have served till date in the services since 1947. I'm making a very bold statement, but I know that, yes, that's right. Fortunately, unfortunately, that's right. So that was about me. That was my time in the Navy. I've been a commanding officer. I've been a captain of a warship. That was my warship. It's not a boat, it's a warship. It's got a commissioning pennant. I've been a squadron commander, a senior officer of Immediate Support Vessels West, 17 warships, 16 officers, 102 men under my command. And these are some snippets at sea, in harbor, and all these operations that I've done as a part of defending oil field exploration areas on the western seaboard of India. Now, quick question. How many people are joining for the first time? Say I am in the chat section if you are. Okay. Okay, I can see some people. Yeah, a lot of people actually have texted put it on the chat that it's my first time. Okay, very nice. Okay, guys, stay tuned. We have a lot of useful content for all of you today. बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी आज एसएसबी के बारे में, exactly क्या सीन है एसएसबी. Okay. Till then, I'll request you to type all your queries in the Q&A section. Okay, guys, things that I do. First things first, I run one YouTube channel which is called as Roger That with NKC, where we tell you the stories, struggles, and victories of our real heroes. And we try to break your myths about SSB. एक बार जाकर के देखना ये कोई एक फर्स्ट शो, सेकंड शो, दी एपिसोड वी हैव अपलोडेड अभी तक 2 एपिसोड्स एंड लॉट ऑफ अदर एपिसोड्स हैव बीन शॉट. स्लोली इसके ऊपर कंटेंट आता जाएगा. एक बार ये देखोगे, नीचे कमेंट्स भी पढ़ना, लोगों ने क्या लिख रखा है, आपकी तरह दूसरे स्टूडेंट्स ने क्या लिख रखा है. इसको देख करके भी बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी एसएसबी के बारे में. Hima, I'll request you to share the link in the chat section, please. Sure, I'll put the link in the chat. Okay, so this is my YouTube channel number 1. The second is I have a YouTube channel number 2 where you will find a lot of authentic content for SSB preparation. It's called as Integrated SSB Virtuosos. Okay, it's a revolutionary space for SSB coaching and mentoring by me. बहुत सारा कंटेंट है यहाँ पे, बहुत सारे टास्क और टेस्ट के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करके मैंने बताया है कि एग्जैक्टली ये टास्क करते क्यों है, कैसे होता है, क्या असेसमेंट है, हम क्या देखना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं. And the link for this channel is also shared in the chat section. Do follow, subscribe, share this, people, as wider it gets. I'm sure most myths about services selection board will be broken very, very soon. Okay. And for all your SSB knowledge daily dose, I also run an Instagram page which goes by the name SSB with ISV. So that's my brand name, SSB with ISV, under CS Joint Services Academy.
And you can follow me on Instagram as well. It's LTCDR underscore Nikhil underscore the GTO. As I have said, I have been a former warship captain as well, and I have been an ADC, also called as Flag Lieutenant in the Indian Navy. फुल फॉर्म ऑफ सीएस किसी ने क्वेश्चन पूछा है, मेरी माताश्री के नाम पर है, मेरी माताश्री का नाम है चंद्रकला, तो इट्स चंद्रकला. एस स्टैंड्स फॉर शकुंतला. ओके, नाउ ओके, इज इट रियली डिफिकल्ट टू क्लियर एसएसबी? क्या लगता है आप लोगों को? चैट सेक्शन में कहीं पे कुछ कमेंट कीजिए. ये यस और नो, व्हाट डू यू गाइस फील? बहुत डिफिकल्ट है क्या एसएसबी? बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है. ठीक है, देखो गाइस, ये है सच. एवरी ईयर लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स अपीयर एट वेरियस सेंटर्स, वेरियस बोर्ड्स, बट दे गेट स्क्रीन्ड आउट ड्यूरिंग द डे वन इटसेल्फ. द रीजन बिहाइंड दिस इज नॉट हैविंग प्रॉपर नॉलेज. पहले दिन ही स्क्रीन आउट हो जाओगे. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? वी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक द मिथ्स, ताकि एटलीस्ट आप स्क्रीन इन तो हो जाओ. देयर इज अ लॉट ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दैट इज फ्लोटिंग अराउंड along with the right information also on the internet. I'm trying to tell you what is important for you so that your probability of getting recommended increases. SSB is you versus you. ये है SSB. You are not competing with anyone else but you. ये फैक्ट है SSB का. अब आपके बारे में पता चलेगा PIQ फॉर्म से, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन फॉर्म जो आपको भरना होता है जब आप स्क्रीनिंग क्लियर करते हो. सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होगी. ठीक है, इसका एक्सेस इंटरव्यूइंग ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट के पास ही होता है. जीटीओ के पास इसका एक्सेस नहीं होता. जीटीओ को बस खाली सिर्फ तुम्हारा चेस्ट नंबर और तुम्हारा नाम, वो भी नाम ही फाइंड्स आउट ओनली व्हेन यू कम टू द कमांड टास्क. तब तक तो ही जस्ट सीज यू एज नंबर्स, चेस्ट नंबर, दैट्स इट. सो गाइस, बीच बीच में आई एम रिमाइंडिंग यू दैट you should keep posting your questions in the comment section. We'll start taking the questions in a while. Okay. क्या है SSB? Services Selection Board. Your only entry gate to become an officer in the Indian Defence Forces, Armed Forces. There are 21 services selection boards and Air Force selection boards. ये कुल मिला करके this total is 21 right now across India. Some of them I have flashed. Few of you would have appeared for SSB और AFSB in the past. बहुत लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, बहुत लोग नहीं भी जानते इसके बारे में. ठीक है, तो अब सीन है क्या एग्जैक्टली? SSB Kolkata is the latest board of the Navy that was commissioned in May 2019, and I was the commissioning crew of SSB Kolkata. That was me at SSB Kolkata. And after that, I was appointed at 12 SSB Bangalore. Okay, guys, so this is how it works. Day 1, OIR test, picture perception and description, discussion test. एंड स्टेज 2 सिलेक्शन. यहाँ पे ऑन द स्पॉट कॉन्फ्रेंस होती है, जो आपके सामने 3 लोग बैठे रहते हैं जब आप डिस्कशन करते रहते हो. वो 3 लोग जीटीओ, आई और साइकोलॉजिस्ट ही होते हैं. आपका डिस्कशन खत्म होने के बाद में ऑन द स्पॉट वो लोग डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन योर ओआईआर एंड हाउ यू हैव परफॉर्म्ड इन इंडिविजुअल नरेशन एंड डिस्कशन ऑफ योर पीपीडीटी. और उसके बाद में वो अपना मन बनाते हैं कि हाँ कितने लोगों को स्टेज 2 में रखना है, किस किस को रखना है रादर. एंड उसके बाद से डे 2 से आपका डिटेल्ड असेसमेंट स्टार्ट हो जाता है. सेकंड डे जो साइक टेस्ट, 4 टेस्ट होते हैं, टैट वैट एसआरटी एसडीटी. डे 3 डे 4, वन ऑफ योर मोस्ट इंटरेस्टिंग डेज. दीज 2 डेज ग्रुप सिचुएशनल टास्क होते हैं. ग्रुप टेस्ट नहीं होता, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर है, बट ग्रुप सिचुएशनल टास्क कंडक्ट कर रहा है. एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज सब्जेक्टेड टू अ सिचुएशन बेस्ड टास्क. फिर इन बिटवीन आपके इंटरव्यूज भी होंगे. एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर है जो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कंडक्ट करता है इन अ फॉर्मल फॉर्मेट, आपके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है ऑन समथिंग विच इज कॉल्ड एज बिहेवियर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल. आज तक आपने क्या किया लाइफ में और आगे आप क्या करोगे व्हेन यू आर सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम स्ट्रेस, extreme physical, mental, emotional, psychological, spiritual, and physiological stress as well.
And then finally, fifth day, there's a conference day. All assessors who have been associated with your assessment at the board, they meet, they come together and they discuss about your candidature and they make up their mind in recommending you for a career in the Indian Armed Forces as an officer. कोई भी आर्मी नेवी एयरफोर्स कॉन्सेप्ट यही है. So guys, बात ये है कि while I was there on the other side of the table, it's very painful for me to see that फौज में ना बहुत वैकेंसीज है. It has got a lot of resources, a lot of vacancies, but we don't have enough aspirants who are qualifying SSB so that they can become officers. ये ट्रूथ है. Okay, so let's talk about GTO myths. पहले GTO myths के बारे में बात करते हैं. Myth number 1. No single task has any particular importance. All tasks are important. ये अगर एक पैटर्न नहीं होना है, जीडी के बाद ही जीपी होगा, उसके बाद ही पीजीटी होगा, उसके बाद जीओर होगा, उसके बाद ग्रुप टूटेगा, हाफ ग्रुप टास्क होगा, उसके बाद फर्दर टूटेगा, फिर लेक्चरेट होगा, फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होगा, फिर कमांड टास्क होगा, उसके बाद फाइनल ग्रुप टास्क में रीग्रुप हो जाएगा. ये पैटर्न सेम है. 1941 में बना था, 2024 है. कॉन्सेप्ट सेम है. ग्रुप अप्रोच टू लीडरशिप टेस्टिंग बोलते हैं. तो लोग बोलते हैं सर वो लेक्चर रेट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, सर कमांड टास्क इज अ मेक और अ ब्रेक टास्क, वो तो कमांडर वाली बात है, लीड करना है. अरे लीड तुमको यहां भी करना है, लीड तुमको यहां भी करना है, लीड तुमको यहां भी करना है, लीड तुमको यहां भी करना है. वी आर ट्राइंग टू चेक योर ग्रुप इफेक्टिवनेस, हाउ इफेक्टिव मेंबर ऑफ द ग्रुप यू आर, एंड दीज आर ऑल द टूल्स. एक चीज को इंडिविजुअल चीज में नहीं देखना चाहिए. That is not how the assessment happens. That's not what GTO looks at. That's not what GTO sees. GTO is trying to correlate everything together so that he can make up his mind ki how effective member of the group you are, that tomorrow when I ask you to lead men in operations or in war, God forbid if you were to get into a full-fledged war, that you will respond, you will deliver those KRAs, key responsibilities areas, with decency and common sense. You will think out of the box, apply your mind in extreme VUCA, and showcase and display extreme ownership, which is nothing but sense of responsibility. तो ये था आपका पहला मिथ. अब दूसरा मिथ. द सीक्वेंस ऑफ द टास्क रिमेन सेम एवरीवेयर. ये जो मैंने सीक्वेंस आपको एक्सप्लेन किया था, ये ऐसा ही रहेगा. ये पहले होगा, आगे होगा, पीछे होगा, ऐसा कुछ नहीं होता. तो ये मिथ को तोड़ दो. ये 9 टास्क जैसे के वैसे सारे 21 बोर्ड्स में जैसे के वैसे होंगे. ठीक है. आई गॉट दिस ब्रीफिंग. जो जब मैं जीटीओ बना था तब मैंने ये ब्रीफिंग्स वर्बैटिम याद की थी मैंने. ये टास्क की ब्रीफिंग्स है. आई एम ट्राइंग टू शो दिस ऑन द स्क्रीन. जीडी की ब्रीफिंग ऐसे ही होगी, जीपी की ब्रीफिंग ऐसे ही होगी, पीजीडी की ब्रीफिंग ऐसे ही होगी. सारे जीटीओ सारे बोर्ड्स में सेम ही ब्रीफिंग बोलेंगे टू मेंटेन, टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी. वी आर रिक्रूटिंग फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस. अपने घर के लिए फौज तो नहीं बना रहे. देयर इज अ स्टैंडर्डाइजेशन. तो ऑल टास्क्स हैव इक्वल इंपॉर्टेंस. द सीक्वेंस रिमेन्स द सेम. ना एक सिंगल टास्क का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ऑल टास्क आर कोरिलेटेड टू ईच अदर. जीडी का डायरेक्ट कोरिलेशन लेक्चरेट के साथ में है. जीपी का फर्दर कोरिलेशन पीजीटी में होता है. पीजीटी के फोर्थ ऑब्स्टेकल में कुछ करोगे तो उसका डायरेक्ट कोरिलेशन जीओआर के साथ होगा. जीओआर में हम लोग कुछ एक पर्टिकुलर चीज देखना चाह रहे हैं, उसका फर्दर कोरिलेशन इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में होगा. पीजीटी और एचजीटी में क्या किया, उसका फर्दर कोरिलेशन हम निकालेंगे कमांड टास्क में. तो खाली कमांड टास्क इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं होता. ठीक है. ओके. नाउ यू डोंट हैव टू कंप्लीट ऑल द 10 ऑब्स्टेकल्स. ऑल ऑब्स्टेकल्स कर दूंगा मैं, हाँ भाई 10 ऑब्स्टेकल्स है, 10 के 10 कर लूंगा, हाँ मैं ऑफिसर बन जाऊंगा. नहीं, मैं रिपीट करूंगा, मैंने 10 की जगह 15 कर दिए, मैं ऑफिसर बन जाऊंगा. ऐसा नहीं होता. खाली बॉडी लिम्ब कोऑर्डिनेशन चेक करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग. बीएलसी बोलते हैं इसको. ठीक ठाक है, भाग दौड़ लेता है, थोड़ा बहुत स्टेमिना है, हाथ पैर ठीक ठाक हिला लेता है, अच्छा ठीक है, इसको एकेडमी भेजेंगे, ट्रेन हो जाएगा. 6-7 ऑब्स्टेकल कर लोगे उतना भी काफी है, कोई बड़ी बात नहीं है. 4-5 भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. कमांड टास्क इज नाइदर अ मेक और अ ब्रेक टास्क. कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं है इस टास्क का, कोई भी स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं है.
इंडिया में कोई भी कुछ भी अगर बोल रहा हो आपको कमांड टास्क के बारे में, मैं बोल रहा हूँ मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर निखिल कुमार चंद्रकला है। जीटीओ में एक बोर्ड बनाया मैंने और दूसरे बोर्ड में सर्विस की है। 12 SSB as a part of Selection Center South was one of the first boards of our country that was established. It was established on 1st April 1949. तब बना था 12 SSB 17 and 24 Selection Center South. I've served there as well. ये मैं बोल रहा हूँ, पत्थर की लकीर है, इसका फॉन्ट साइज 1000, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन अपने दिमाग में डालो। ऐसा कुछ नहीं होता। कमांड टास्क इज अ मेक और अ ब्रेक टास्क। नहीं कुछ गड़बड़ किया है मैंने, नहीं होऊंगा मैं रिकमेंड, ऐसा नहीं होता। इसके पहले 7 टास्क हो चुके हैं, दिस इज 8th टास्क। ठीक। 10 myth number 6, SSB is a test of your basic intelligence. No, it is not. It is a test of your effective intelligence. Now what is effective intelligence? It is an intelligence which you utilize in coping up with situations of practical complexity. Practical situations of, let's say, varying complexity, extreme VUCA, volatile, uncertain, complex, and ambiguous, may how you respond and not react. We don't want sodium in water. We want people who are responsive, not reactive. So it's a test of your effective intelligence, which is an attribute of your personality, which you utilize in coping up with practical situations of varying complexity. Anything and everything that you do, the TAT, VAT, SRT, SDT, group situational tasks, these are all practical tasks जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम वैरी कर सकते हैं। जीटीओ के हाथ में है। स्ट्रेस का रेगुलेटर जीटीओ के हाथ में होता है, कम ज्यादा कैसे करना है। ही इज बीन ट्रेन्ड, शी इज बीन ट्रेन्ड टू डू दैट। ओके। Some people have OLQs, others don't have. That's not the case, my friend. अगर ये वर्ल्ड पॉपुलेशन है, everybody on earth has got officer like qualities. It's just a method to interpret your personality. That's all. We are looking for a particular shade of an officer like quality. Particular shade. आगे देखते रहना, एक कैंडिड इक्वेशन बताऊंगा क्या शेड है, तब समझ में आएगा। मेरे अंदर ओएल क्यूज है, उसके अंदर नहीं है, ऐसा नहीं होता। प्रिपरेशन आफ्टर रिटन एग्जाम इज अ गुड आइडिया, ये तो बहुत बड़ा मिथ है। Day 1, today, right now, after this webinar, during this webinar, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। पता होना चाहिए मेरी भैंस कितनी पानी में। Memorizing all current affairs knowledge is a must. No, it is not. We need working level knowledge of what is happening in and around you. मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मेरे शहर में, मेरे स्टेट में, मेरे कंट्री में, धरती पे। And you should be able to logically connect the dots and you should be able to see the pattern. Gestalt बोलते हैं इसको। On Gestalt psychology, the whole concept of assessment is based at SSB. तो ये रट्टा मार लोगे ऐसे नहीं होता, वो तुम्हारे अंदर imbibed होना चाहिए। It is directly correlated with something which is called as inquiring attitude. It's a sub quality of reasoning ability, factor 1 second OAQ. Your reasoning ability has to be very, very strong. मेमोराइज करने से नहीं होगा, पैटर्न बना के याद रहना चाहिए तुमको। ओके, सो दिस इज द कैंडिडेट इक्वेशन दैट वी फॉलो। Present level of the candidate when you are appearing for the SSB, when we add it to the trainability, will you reach average potential officer level? And trust me, इसका डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन अवेलेबल है। DIPR, the nodal agency which regulates the selection system in our country, they've given a standard QR, qualification requirements. तो जब ये इक्वेशन बैलेंस होता है तभी हम लोग रेकमेंड करते हैं, वरना नहीं होगा। तो एक मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल है कैंडिडेट का, जो पर्टिकुलर एंट्री टाइप, एज ग्रुप, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, इन सब चीजों पे डिपेंडेंट है। ट्रेनेबिलिटी के ये फैक्टर्स है, तुम्हारा OIR का रेटिंग क्या है,
सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, इनसाइट क्या है, मोटिवेशन क्या है, एज क्या है, प्रेजेंट लेवल क्या है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या है, इन सब के मार्क्स देने होते हैं। उसको जब मैं तुम्हारे मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल के साथ, प्रेजेंट लेवल के साथ ऐड करूंगा, इट हैज टू रीच द एवरेज पोटेंशियल ऑफिसर लेवल आफ्टर ट्रेनिंग. सो योर प्रेजेंट लेवल हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल. अगर ये नहीं है तो नहीं रेकमेंड होगे, कहीं ना कुछ गैप है, कुछ ना कुछ कमी है. Okay, guys. So how do you achieve all these things? You need some kind of dedication, some kind of determination, and most importantly, you need consistency, which is nothing but discipline. Also, you need some kind of guidance under correct mentor, someone who has been there, who's been done that, so that he knows what is you, who are you, and as per you, क्या सही है और क्या गलत है, what should be done, what should not be done. Some amount of knowledge of current affairs, yes. Some kind of a physical routine that you do to keep yourself fit. So run, hop, skip, jump, and sweat every day. And correct knowledge of each and every task that's happening during the SSB. Apologies for a grammatical error there. And you need some confidence, but not overconfidence, which comes through practice. Hey, these are my students. ये लड़का है कृष्णा, आया मेरे पास, 8 दिन पढ़ाई करी और चला गया, रेकमेंड होके आ गया. 4 बार नॉट रिकमेंडेड, 2 बार स्क्रीन आउट, 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट, उसके बाद एक बार जा नहीं पाया, फिर आया मेरे पास में, नॉन डिफेंस बैकग्राउंड, ठीक है, बट वेरी डेडिकेटेड गाय, गॉट रिकमेंडेड. Then this girl Rutuja, she comes from an IT background, very nervous initially during the classes, and but with dedication and hard work she made it. She got recommended, she's got a joining letter as well. She's joining अभी academy, SSC ITS, ठीक है, पहली बार गई, recommend होके आ गई. Then this guy Madhvendra comes from a very good background, came with a very clear head motive, and very well of family. He could have easily chosen anything else in his life, but he wanted to join the forge, he wanted to join the army, got recommended. This is exactly what he wants to say. Then this guy Soham Das Gupta, he just recently got recommended from SSB Kolkata. Okay, chalo, let's open the floor for some questions. Hima, let's start taking some questions. Yeah. So there are a lot of questions you guys have sent in the chat section. I'm telling you right now, I might miss those questions from the chat section because I missed. That's why I was asking you to put it in the Q&A section. So I'm taking the questions from the Q&A section. There is a question from anonymous attendee. Good evening, sir. I'm right now 3 times written failed, 1 screen out, 2 conference out by tech entry. But sir, all because I don't do my work properly. Sir, now I want to start and have only one and one dream to join defense. Please tell me how should I start as a first day? कल से ही सवेरे रूटीन डालो अपने जीवन में. एक 5 बजे उठो, 5:30 बजे उठो, 6 बजे उठो. सबसे पहले उठ के आफ्टर योर मॉर्निंग रूटीन जस्ट गो फॉर अ रन एंड कम बैक. ट्राई टू अचीव दिस स्टैंडर्ड 2.4 kilometers in less than 10 minutes. If you can achieve this standard, whatever process you go through will make you fit. Second thing, वो भाग दौड़ के आने के बाद में वट एवर एक्सरसाइज यू वांट टू डू, कूलिंग डाउन एंड थिंग्स लाइक दैट, उसके बाद में न्यूज़पेपर लेके बैठो 30 minutes, रीड एवरीथिंग व्हाट इज देयर इन द न्यूज़पेपर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वट एवर न्यूज़पेपर यू वांट टू पिक अप, जो पढ़ना है पढ़ो. अगर स्मार्टफोन्स यूज करते ही होंगे आई एम श्योर, तो डाउनलोड वेरियस एप्स which talk about editorial columns across various aggregator of editorial columns of various newspapers. पढ़ो इस चीज को. Next. Pragya is asking how to tackle PSB interview. PSB, she's talking about Coast Guard, ICG.
प्री सिलेक्शन बोर्ड होता है शायद से ये कोस्ट गार्ड का। सी आई हैव नॉट सर्व्ड इन अ कोस्ट गार्ड सिलेक्शन बोर्ड, सीजीएसबी में मैंने सर्व नहीं किया है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता अगर मैंने वहाँ पे सर्विस नहीं की है तो। बट जनरली इट रिमेन्स द सेम, कोस्ट गार्ड ऑफिसर्स ऑल्सो गेट ट्रेन्ड विद अस एट DIPR। फिलोसॉफी सेम ही है, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, एंड जो मैंने अभी बताया बेसिकली ये करते रहोगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा, दर इज नथिंग ग्रेट। नेक्स्ट। Shaur is asking, how can I know if more practice is required for OIR test? Out of 10 questions or out of 100 questions, how many questions का आंसर्स यू आर गेटिंग राइट? सिंपल किताबें उठाओ यार, इतने सारे अलग अलग राइटर्स मिल जाएंगे तुमको वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट के। बस यू हैव टू चेंज योर, यू हैव टू जस्ट इंप्रूव योर एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स, दैट्स ऑल। उसी का टेस्ट है वो, परसेप्शन ऑफ रिलेशंस, दैट्स ऑल। तो ये जैसे बढ़ता जाएगा फॉर एवरी 100, अगर आपका स्कोर बढ़ता जा रहा है तो काफ़ी है, 100 में से 100 आए तो बहुत बढ़िया है यार, और क्या चाहिए। नेक्स्ट। Sumit is asking, sir, there are multiple professions with their own unique work and actions, and each picture of TAT comes with different scenarios. So how can we come up with good actions? See, TAT, VAT, SRT, SDT is there to know more about you as a person. Your stories should depict or talk more about you. So you have to write your actions. Whatever situations you've been subjected to in TAT, जो भी तुमको पिक्चर दिख रहा है, that stimulus is a situation. You are defining a task, action, and then you are defining a result. जो तुम्हारे actions है वही तुम्हारे behavior manifestations है, और वहाँ से तुम्हारे बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए, ज़्यादा information निकल के आनी चाहिए, and it should match all throughout whatever you are talking about. It should match. So talk more about your previous experiences or what you want to do and that you can rationally and practically achieve as per your strengths and weaknesses, for which you need to know about yourself more. What are my strengths and what are my weaknesses, and what is my game plan to overcome my weaknesses? ये चीज अगर ध्यान में रहेगा तो अपने आप तुम्हारी स्टोरीज अलाइन हो जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक ही झटके में होगा। नेक्स्ट। Ritika is asking, sir, I'm having my SSB on 27th. Please give me some tips. Very nervous. व्हाट्स देयर टू गेट नर्वस यार? कुछ नहीं है, जाओ दिल खोल के बोलो, मनसा वाचा कर्मणा सिंक होना चाहिए। आशया अक्षरा अभियोगेन ऐक्यम भक्तानिंद्रियम विहिति समुपे। नेक्स्ट। Ashok is asking, sir, what could be my strategy for my first SSB, which might be in last month of the year, so I can clear SSB in first attempt? I have already answered this question as far as the strategy is concerned. But yeah guys, you are most welcome to come and join my course. जिनका अभी नज़दीक में SSB है, आ जाओ, join the course and I'm sure you will benefit from the course. Next. Sir, psych improve कैसे करें? What should be ideal approach to improve psych for SSB? ये अभी तो आंसर किया ना मैंने, यू हैव टू टॉक मोर अबाउट यू एंड हाउ टू बिल्ड दैट, वो भी मैंने बताया अभी के अभी। नेक्स्ट। Sahil is asking how to prepare for SSB NDA so that we can clear it in first attempt. For example, for GTO, we don't have that much of exposure of Balli Fatta as a fresher. Rassi Fatta Balli does not make you an officer. It's your attitude and aptitude. This is the title of my upcoming book as well. So आप भूल जाइए कि रस्सी फट्टा बल्ली अगर आप करोगे तो ही, उसका एक पर्टिकुलर मेथड है। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन सुपर डिटेल एग्जैक्टली ऐसे ही क्यों डिजाइंड है वैसे ही क्यों डिजाइंड है, मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन माई कोर्स एंड ऑल माई स्टूडेंट्स। आई हैव कोर्स्ड अबाउट 70+ स्टूडेंट्स एंड 20 ऑफ देम हैव बिकम ऑफिसर्स, बिना कोई जीटीओ ग्राउंड के, बस इतने से में ही हो गया। ठीक है, सो कुछ नहीं चाहिए रस्सी फट्टा बल्ली, इट्स ऑल जस्ट अ टूल, दैट्स इट, इट्स योर एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। ठीक है। नेक्स्ट। Sir, mostly I'm scared of GTO and individual obstacle. Please help. इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के लिए स्केयर का क्या है यार? इट इज सिंपल यार, भागो दौड़ो यार, हॉप स्किप रन जंप एंड स्वेट एवरी डे, यू विल बी एबल टू डू दैट ऑब्स्टिकल। तुमको कमांडो नहीं बनना है उस चीज को करने के लिए। जब तुमको कमांडो बनाना होगा, जब तुम वॉलंटियर करोगे तो तुमको अच्छे से बनाएंगे। ये बस खाली तुम्हारा बेसिक फिटनेस लेवल को चेक करने के लिए, बॉडी लिम्ब कोऑर्डिनेशन कैसा है, कोई ऑकवर्डनेस तो नहीं है। नेक्स्ट। I'm facing
I'm facing problem while writing sentences in VAT. My mind is getting blank. Need your guidance. वैट इज बेसिकली एक्शन ओरिएंटेशन, जो तुम्हारे टैट से ही बाहर निकलता है. तो आई डोंट नो, उसका एक पूरा सेशन है मेरा जो मैं समझाऊंगा बैठ के. व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन द कोर्स एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या चीज़ है ये. नेक्स्ट. Sir, do we need to be smart or honest during interview? What should be the correct gesture in it? स्मार्ट नहीं, स्मार्ट एक्ट नहीं चाहिए. चंट लोग नहीं चाहिए, चतुर लोग चाहिए, मेहनती लोग चाहिए. चंट नहीं बनना, स्मार्ट एक्ट नहीं मारना, ऑनेस्टी चाहिए. नेक्स्ट. I'm taking Vipul's question. Sir, I have negativity and flaws in me. Sir, is it okay to show in SD of SSB, or the person getting recommended should be perfect? No, if you know what your flaws are, then you should write how you're going to overcome them. What's your game plan to overcome them as well? Talk truth. Next. How to fill the PIQ form? There's a separate session for this. 2.5 घंटा लगता है इसको समझाने में. I can't answer this on a webinar. Sorry. Next. Sir, is it compulsory to apply only in the last year or after the completion of master's degree or SSC entry? Can't we apply in the first year of master's degree? Even if you apply in the first years of master's entry, it works for you. But the point is, you'll have to leave your master's just in case if you get recommended and if you get a call to call later or joining instructions to join the academy. So advisable to check your eligibility criteria as per your age. या मास्टर्स ज्वाइन करने से पहले ही कर दो. अगर मास्टर्स ज्वाइन कर लियो और उसके बाद में बोल रहे हो कि एसएसबी भी देना है और फौज में भी जाना है, तो देन यू हैव टू मेक अ चॉइस. नेक्स्ट. Sir, in PPDT instructions, when it is said what led to the situation, what is happening now, and what will be the outcome, what does this mean and how to make a story according to this? You have to define a situation, you have to define a task. You have to see that if you superimpose yourself on the central character, whichever you choose, what are your actions and what is the result that you want out of them. That's exactly what is past, present, future. Next. Importance of OIR. Very important. जितना अच्छा होगा उतना अच्छा तुम्हारा analytical thinking है. That means you can think out of the box, you can perceive relations here and there. It's one of the indicators that अच्छा हुआ है तो अच्छा अफसर भी बन सकता है. Next. Sir, GTO अच्छा नहीं जाता. अभी पांडे. तो तुम कुछ रहे हो वहां पे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए. यू आर ट्राइंग टू पुट अप अ शो, दैट इज वाई अच्छा नहीं जाता. यू आर नॉट योरसेल्फ. नेक्स्ट. Difference between SSB and AFSB. नो डिफरेंस. एएफएसबी के पैरामीटर्स भी सेम ही है, बट वो थोड़ा कॉर्पोरेट मेंटालिटी से सोचते हैं. एक एक्स्ट्रा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होता है वहां पे, कोई खास डिफरेंस तो होता नहीं है. द क्यूआरस रिमेन द सेम. नेक्स्ट. Basic things assessors see in a candidate for recommendation. Give me a man with reasonable common sense and decency. That common sense is effective intelligence and decency is sense of responsibility. बाकी का सब कुछ तुमको ट्रेन कर देंगे. ये दो चीजें इनेट है, होना चाहिए. नेक्स्ट. वो जब मैं ये बोल If रहा हूँ कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनेट है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये मेरा मानना है. लोग इस पे डिसअग्री भी कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर रीजनिंग एबिलिटी स्ट्रांग है तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस को स्ट्रांग बनाया जा सकता है. लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो है या तो नहीं है. लॉयल्टी एंड ट्रस्ट या तो है या तो नहीं है. ये मेरा मानना है. नेक्स्ट. if there are so many vacancies, then why students are getting merit out? Question from Subrat. You might have not been able to make the बार एंड उस वैकेंसी जो पब्लिश की गई थी, उस वैकेंसी में उस बार के अंदर तुम पहुंचे नहीं. हो सकता है दो सेसर्स ने रेकमेंड किया और एक ने नहीं किया था. ही केम अप इन द कॉन्फ्रेंस, तो तुम्हारे नंबर थोड़े कम आए थे. दैट इज वाई यू आर मेरिट आउट. नेक्स्ट. Sir, is something which we do daily, constructive and productive skill, be called as a can it be called as our hobby? Like, sir, I do yoga every day. Can I write it in my hobby section? So you need to understand the difference between what is game, what is sport, what is hobby, and what is extracurricular activity. If yoga is a hobby, so how much do you benefit out of it? And what is your intent of pursuing this hobby? You should know. And professionally उसके अंदर कुछ किया है तो then it turns into an extracurricular activity. Then you should not write that as a hobby. ठीक है.
एंड देन अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो गया है तो उसको अचीव करके तुम और क्या कर रहे हो, या तो फिर खाली रोज घर पे बैठ के अगर योगा कर रहे हो तो उसका नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि तुम रोज कर रहे हो। नेक्स्ट। Sujata is asking, sir, languages matter करती हैं क्या? My communication in English is weak, so can I use Hindi language? The language to be used at SSB is English. However, if you get stuck, you may speak in Hindi, but do revert to English as soon as you can. Imagine you getting posted as a defense attaché to any country outside India, where you cannot communicate. The primary language of communication is not Hindi. How will you communicate with other leaders, other people of other nationalities? कैसे करोगे? So that is why that English is a universal language. Next. Subrat is asking, sir, do you provide online paid SSB course? The answer is yes. We will talk about it more in the forthcoming slides. My number is also getting flashed there. If you can see, there is a small number down there, 9113979595. Guys, you can always reach out to me if you have any queries like that. I'll definitely help you out. And Ritika is saying, scared of IO, please help, sir. I got nervous and destroy all my tasks. How do you know that it destroyed all your tasks? How can you say this? मतलब खाली एक टास्क इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आयो कुछ और भी किया होगा। सो आयो अगर अप्रोच करना है तो भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी, अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए कुछ तो करते होंगे ना अपने पर्सनल टाइम में। 24 घंटे में से 1 घंटा तुम अगर अपने फिटनेस के लिए निकाल सकते हैं तो फौज में क्यों आना चाहते हो यार? अनफिट सोल्जर कैनॉट फाइट एन ऑपरेशन, कैनॉट फाइट इनटू एन ऑपरेशन, सिंपल। तो थोड़ा बहुत भाग दौड़, बेसिक फिजिकल फिटनेस, स्टैंडर्ड एक्सरसाइजेस that you do, that much is good enough to attempt individual obstacles. That is how they have been designed. पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के साथ में डिजाइन होता है वो, डिजाइन के स्पेसिफिकेशन है। सारे 21 बोर्ड पे सेम ही होगा, अलग नहीं होगा। तो देर मस्ट बी समथिंग यू डिड रॉन्ग दैट डिस्ट्रॉयड ऑल योर टास्क, इट्स नॉट जस्ट द आयुष। नेक्स्ट। Also, I want to mention one more thing to Ritika. If you come and join our sessions, our batches, we schedule a mock psych test also and a mock interview with our DIPR certified interviewing officer and our DIPR certified psychologist. So you get an idea about it, what kind of situations you have to be there and you are dealing with. So you'll get an idea, or you'll be able to prepare, and these officers will give you, including Nikhil sir, they will give you feedback about the improvement areas that you need to work upon. And so basically, before going to SSB, you'll already be having an idea. Next question is, sir, is it true that almost 90% of the decision regarding a candidate is decided before the conference itself? नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्फ्रेंस में डिसीजन लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिविजुअल असेसर्स अपना अपना असेसमेंट लेकर के जाते हैं, बाद में डिस्कशन करने के बाद डिसाइड करते हैं कि लेना है कि नहीं लेना। नेक्स्ट। उसके लिए Vaishnavi, आई एम श्योर दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट। Vaishnavi is saying, sir, actually I'm conferenced out and my SSB is on 22nd Feb. What should I do to get recommended this time? अभी तो कोर्स में आके बैठ जाओ, 2-3 दिन में जितना कुछ हो सकता है सिखा देंगे। व्हाट शुड यू डू दिस टाइम के लिए तो मेरे को पहले क्या किया था वो बेंचमार्क पता होना चाहिए कि पहले क्या किया। नेक्स्ट। Vaishnavi, I'll say you can reach out to me. My number is there on the screen. You can note it down also, 9113979595. We'll see how we can help you out. Next question is, sir, is there any online mentorship program I can join? My NSB is in the first week of March. Yeah, you can certainly join our program. It'll start soon. Hema will give you all the details. You can connect with Hema and she'll tell you. What exactly is reasoning ability as an OLQ? बहुत बड़ा definition है इसका। How well you can reason out things, whatever comes into your mind, how well you can reason it out. It's got 4 sub qualities: receptivity, inquiring attitude, logical reasoning, and seeing the essentials of a problem. बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा बैठ के, बट रीजनिंग एबिलिटी इज बेसिकली खुद का इंक्वायरिंग एटीट्यूड टू इंक्रीज योर जनरल नॉलेज एंड experiences in life, so that you can logically look at things, you can sift
the problems in order of their importance and then come out to some kind of a solution, reason out a solution logically excluding the emotional factors. इसको reasoning ability बोलते हैं. Next. Next question is correspondence degree MSc Computer Science is eligible for technical entry? Army. Please check the exact eligibility criteria as posted on the official websites of the Indian Army, Navy, and the Air Force. Next. Okay, there is a question how to join coaching. I'll help you guys. If you guys send me a message on my number, I'll definitely help you out. I'm taking one question from Seema. She's saying, I feel I have enough qualities, but to put it out in a better way in SSB, I will need an environment which will help me channel my skills to get recommended. It's because I'm involved in too many things. Can you suggest a way to set up such an atmosphere? I do not have enough friends who are aiming for defense. It doesn't matter, yeah. When I was aiming to join, I didn't have any friend who wanted to join the armed forces, and I got all India rank 1. एनएसबी कोयम्बतूर गया, वहाँ पे एसएसबी दे के आया अपनी नेवी की, ऑल इंडिया रैंक 1 आया. उसके बाद 14 एसएसबी इलाहाबाद गया, वहाँ भी ऑल इंडिया रैंक 1 आया. और एसएसबी के बारे में तो कुछ पता भी नहीं था, ना रस्सी फट्टा बल्ली ना स्टोरी. वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए चुपचाप जो बोला करने के लिए वो कर दिया. और मेरे तो कोई परिवार में भी नहीं था. आई एम द फर्स्ट ऑफ माई क्लैन इन टू दी सर्विसेज. तो ये सब तुम्हारे मन के भ्रम है. ये एनवायरनमेंट चाहिए, वो एनवायरनमेंट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता. करना है करना है, नहीं करना नहीं करना. देश बाद में बना यार, फौज पहले से थी. अब जहाँ तक कि तुम्हारा ये मेंटरिंग का कुछ है, इफ़ यू कम इन टू द क्लास प्रॉब्ली इफ आई लुक एट योर पीआईक्यू फॉर्म आई विल बी एबल टू टेल यू कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या करना है. थोड़ा बहुत क्लास में बैठ के इफ यू अंडरस्टैंड द टास्क्स, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेट थ्रू. दिस इज व्हाट द होल गेम प्लान इज. नेक्स्ट. Sir, I got the hardest task in Group SSB Kolkata, the hanging triangular structure, but missed that instruction for individual You obstacles. know Is that it that is a the reason? hardest. Sorry? How is he able to comment that it's a hardest task? तेरे को सारे टास्क मालूम है क्या एसएसबी कोलकाता के? और कोई फर्क नहीं पड़ता टास्क कोई भी हो. कुछ पहले किया है 7 टास्क में, उसके बाद सीटी आया है. तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, हार्ड है डिफिकल्ट है ऐसे नहीं होता. सब मन का भ्रम है तुम्हारा. हटाओ इन सब चीजों को. अगर तुम्हारी सोचने की क्षमता है तो आसान है, अगर सोचने की क्षमता नहीं है तो सब कुछ डिफिकल्ट है भैया. नेक्स्ट. I'm taking this question from Mrunal. I also want to tell you that Mrunal is from your town, Yavatmal, and when you attended the the school event there, she joined it. She's asking a question. I'm taking a question. I have more than a year for SSB. How to start from today and now to become officer, not only to get selected for armed forces, but to be a officer of my life. ओके देखो यार, ये तो मैं दो चीज सबको बोलता हूँ. पढ़ाई लिखाई के अलावा जो किताबें होती है वो कौन सी किताबें पढ़ते हो दैट विल शेप अप द course of your mind, the way you want to train your mind. You what you read is what you become, and what you eat is also what you become. तो एक तो ये नंबर 1 चीज. एंड न्यूज़पेपर्स एंड एडिटोरियल कॉलम्स ये तो मैं रोज ही ज्ञान देता हूँ. देन सेकंड इज हॉप स्किप रन जंप एंड स्वेट एवरीडे, ये भी बोलता हूँ. इतना काफी है अभी से स्टार्ट करने के लिए. और अगर अच्छा अफसर बनना है तो मन साफ होना चाहिए. देखो यार, कर्म वही करो जो करना ही फल लगे, क्योंकि कर्म ही धर्म. यही कॉन्सेप्ट पे अपने जीवन को अगर बनाओगे बुनोगे तो बहुत अच्छे अफसर बनोगे और बहुत ऊपर भी जाओगे जीवन में. ठीक है. नेक्स्ट. Harsha is asking, I am a working IT professional female and hence I have less time. One time conferenced out, one time screened out. AFSB is exactly in a month. Little backward in physical strength. Please suggest how can I improve on physical fitness and improve on my SSB preparation also. इन खुद जले न होए उजाला. अगर सूरज के जैसे चमकना है तो सूरज के जैसे पहले जलना पड़ेगा. काम खत्म करी तो उसके बाद बाहर निकले, 6 स्वेटर पहनो और दौड़ो 2.4 किलोमीटर इन लेस देन 10 मिनट्स. ये स्टैंडर्ड अगर अचीव करना है तो उसके लिए जो प्रोसेस से गुजरोगे वो प्रोसेस तुमको फिट बनाएगा. ठीक है. सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, याद रखना ये चीज़ को अपने जीवन में. ठीक है. ठोकना है ठोकना है. एंड आई गॉट सो मेनी किल्स, इतने मिलिटेंट मारे. मारने के पहले का जो प्रोसेस होता है ना वो खूबसूरत होता है, उसके बाद में तो ठोकना ही है मिलिटेंट. दैट्स नॉट अ बिग डील. प्रोसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. दैट विल डिफाइन यू एज ए लीडर.
तो कहानी एक ही झटके में अगर समेशन में इंटीग्रेशन करके समझाना है तो आग तो लगाना पड़ेगा भाई, उसके बिना तो होगा नहीं। डिटर्मिनेशन, फिक्सडनेस ऑफ पर्पस, मेंटल कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ विल चाहिए, नहीं तो नहीं हो रहा, नहीं तो गाड़ी मूव नहीं होगी। नेक्स्ट। Sir, can you break the myth whether tech entry is more tough to track than written entries? ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंट्री चाहे कोई भी हो, एसएसबी सेम होगी, फॉर्मेट सेम होगा, खाली ट्रेनेबिलिटी चेंज होता है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज 1 लाख 1 करोड़, फिट करो उसको अपने दिमाग के अंदर, हटाओ। ये मिथ्स तोड़ोगे, अपने आप तुम्हारा जो ओरिजिनलिटी है वो बाहर आता चला जाएगा। तुम मिथ्स की वजह से अपने ओरिजिनलिटी को बाहर आने से रोक रहे हो। ये चीज भी 100 बात की एक बात, लिख के ले लो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज 1000। नेक्स्ट। How to join your courses, class timings, and price of the course? There are many people asking this, so can ओके, we? सीधा सीधा। क्लास टाइमिंग सवेरे 7 बजे से लेके 9 बजे। कोर्स, कॉल हेमा ऑन द नंबर बिलो, डिटेल्स वहाँ मिल जाएगा। 10 क्लासेस होंगी, उसके अंदर सारी थियोरी होगी, और एक मॉक इंटरव्यू भी होगा, और एक मॉक साइड टेस्ट भी होगा, और तीनों लोग मिलके हम लोग तुमको फीडबैक भी दे देंगे कि कहाँ तुम्हारी भैंस कितनी पानी में है, ये सब भी बता देंगे। ऑल आर DIPR सर्टिफाइड असेसर्स। सिंपल। डज दैट आंसर द क्वेश्चन? कोर्स का कॉस्ट वॉस्ट एवरीथिंग हेमा विल टेल इन डिटेल। Okay, and there's one more question I want to take from Vinayak. Um, Sir, 4 times screen out, 2 time conference out, no coaching. I have a full-time job as a mechanical engineer, which eats up most of my time, which I'm serving notice period now. I got offers from universities in Germany, and I have to join in May. I have a SSC Tech entry coming up for Army. I want to give my very best possible performance this time as a last chance. Please tell me how can I manage my daily schedule to prepare the best. I want to take up SSB coaching before this attempt somehow by making my time away from work. पहले तो Weak क्लास point is में, cyclist. वो सब हो जाएगा यार, वो सब बता देंगे क्या है वीक पॉइंट है क्या है। तू पहले तो आगे क्लास में बैठ बेटा, क्योंकि तेरे तो चांसेस बहुत हाई लगते हैं मेरे को, जिस तरीके से तू बोल रहा है। एक बार तेरे को सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तेरा PIQ फॉर्म देखना पड़ेगा, थोड़ा सा असेसमेंट सिचुएशन में थोड़ा डाल के तेरे को देखना पड़ेगा, पता चल जाएगा क्या सीन है। तू पहले तो क्लास में आके बैठ, देन विल फिगर आउट। ठीक है, नेक्स्ट। I'm taking धीरे this धीरे question बहुत from सारे Ish. स्टूडेंट फिर आए, रेकमेंड होके गए। ठीक है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हो जाए। नेक्स्ट। Taking this question from Ishan, he is saying that he's Krishna's friend. Got screened out 3 times in a go. My routine start from daily running and exercise, reading book and one editorial of Indian Express. By the way, I started this after getting screened out third time. I trust myself and I have strong feeling that I have it in me. But as no one is perfect, I have a fear of speaking or expressing myself, which is a barrier between me and my uniform. Uh, Please guide me, sir. डर किस बात का है भाई? जो मन में है वो जुबान पे नहीं आ सकता, तो बंदे तेरी बात क्यों सुनेंगे? कल चल के मान ले तू बन गया, कोई स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव भी बन गया, चला गया भाई, चलो 9 पारा। ओके। जो बंदे, खैर ये एग्जाम्पल गलत है, लेट मी रिवर्ट छोटा सा। ऑफिसर बन गया, किसी यूनिट में चला गया, बंदे तेरी बात क्यों सुनेंगे अगर तेरे को बोलना ही नहीं आता तो? सिंपल सी बात है। तो डर किस बात का है भाई? अगर 100% कॉन्फिडेंस है कि तेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड सच है, तो बोल, मुंह से बाहर निकाल। मैं सीधा खुला बोल रहा हूँ तुम लोगों को यहाँ पे बैठ के, बिना किसी डर के। किया है मैंने, बीन देयर डन दैट। जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे तू भी बात कर ली, अगर तेरे को तेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे 100% गारंटी है तो चाहे GD हो, चाहे GP हो, चाहे लेक्चर रेट हो, चाहे PGT हो, मुंह से निकलना चाहिए। अगर मन की बात है मुंह से निकलना चाहिए, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट, घुमाना फिराना क्यों? है कि नहीं? किस बात का डर है, वही नहीं समझ में आया। ओके, नेक्स्ट। Uh, I'm taking this question from Bala. Good evening, sir. I'm a repeater. Got 3 times conference out, 2 times screened out. I'm a IT working candidate. I guess I lack in GTO. What are the things I need to keep in mind to give my best and clear GTO? यार, यू नीड टू नो व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग इन एंड अराउंड द वर्ल्ड, एंड थोड़ा बहुत कॉमन सेंस चाहिए लाइफ में। उसमें से GTO क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। So, what type of attitude is needed to become an officer, and how can we improve that? डिसेंसी एंड कॉमन सेंस,
गिव मी अ मैन विद रीजनेबल कॉमन सेंस एंड डिसेंसी। मैं नहीं यार, ये फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ, मिलिट्री क्रॉस, दैट जेंटलमैन वाज सेइंग आज भी सच है। दैट्स ऑल। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई होना चाहिए। नेक्स्ट। Kaushik is saying, I'll join the upcoming batch. Kaushik, you can reach out to me, I'll help you out. Whoever, guys, there's one thing that I want to add here. There are many people asking questions about communication and confidence issues. Apart from this, even we try to provide you something here and there to even improve on your confidence as well. We try our best to provide you each and every guide and help. So if I'm not saying he join the batch. I'm just saying reach out to me on that number so that I can talk to you. I that's the first step. Please talk to me on that number from tomorrow, not after the webinar today. So yeah, should we take more questions? And नहीं, आगे बढ़ते हिमा। लेट्स जस्ट गो अहेड एंड दैट्स इट गाइस। ये सब तो बता चुका हूँ मैं तुम लोगों को। रॉजर दैट विद एनकेसी देखो, इस पे प्रोसेस समझ में आएगा तुमको। एसएसबी का प्रोसेस क्या होता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या है, और इनके बिहेवियर मैनिफेस्टेशंस क्या है, ये सब समझ में आएगा तुमको। देखो इस चीज को, इसके नीचे कमेंट्स क्या है वो भी पढ़ना है एक बार। लोगों ने, जिन लोगों को मैं जानता नहीं पहचानते नहीं, कहाँ कहाँ से बच्चों ने क्या क्या कमेंट्स लिख रखे हैं, देखना एक बार। ठीक है। एंड या खैर, ये तो पुराना है, अब तो 5000 हो गए कुछ। ठीक है। क्योंकि जनता को क्या लगता है भाई, जीटीओस तो बड़े बुढ़े होते हैं, है ना। जनता यही सोचती है, बड़े एजेड लोग हैं जीटीओस। यंगेस्ट जीटीओ ऑफ द कंट्री, इतना यंग बंदा कहाँ से आ गया भाई जीटीओ, कहाँ से पैदा हो गया। अब ये भी सोचते होंगे ना। तो यार गाइस, दिस इज इट। आओ देखो जरा, तब समझ में आएगा, बहुत सारे मिथ टूट जाएंगे। और एक एक टास्क के बारे में बहुत डिटेल में भी एक्सप्लेन करके दिया है मैंने कहीं कहीं पे। ओके। ओके गाइस, सो लाइव सेशंस तो होंगी ही मेरे साथ में। जीटीओ की थियोरी और प्रैक्टिस भी होगी, पर्सनल इंटरव्यू और मॉक साइट टेस्ट भी होगा, और फीडबैक भी मिल जाएगा। दैट्स व्हाट वी आर बीन टेलिंग यू। एंड रेपिटेटिव एक्सरसाइजेस भी होंगे, समझ में आएगा एग्जैक्टली डे टू डे इम्प्रूवमेंट क्या है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट रीओरिएंटेशन एंड यू आर गुड टू गो, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। And one more thing, until you get your SSB date, you can keep enrolling for the next classes again and again and again and again. Once you enroll, उसके बाद keep sitting in the classes as much as you want. ठीक है। ठीक है। बाकी तो ये सब चीजें मैं बता ही चुका हूँ। वी गिव यू मेजरेबल फीडबैक एंड वी गिव यू अचीवेबल टास्क्स। बिगिनिंग से ही देना स्टार्ट कर देते, सो दैट यू नो वी कीप इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ द इंटेंसिटी विद एवरी एक्सरसाइज। फीडबैक दे करके पता चल जाएगा कि यार मेरी भैंस कितनी पानी में, कहाँ पे क्या एग्जैक्टली मेहनत करनी है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी रिकमेंडेशन की। दैट्स इट। ओके। सो आई जस्ट skip this. uh, yeah, this is what I've been talking about. Now, see, the idea is to find out the gap between the minimum acceptable level and your present level. इस gap को अगर मैं fill करूंगा ना, तो ये equation balance होने के chances बहुत ज़्यादा है. That's exactly what we do. I try to find out your present level क्या है, in terms of shades of officer like quality. Exactly कहाँ पे कौन से OLQ का क्या factor का क्या problem है, वो भी बता देंगे। ठीक है। So guys, start as early as possible. मिथ तोड़ो, रिटर्न एग्जाम के बाद स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है भैया, ऐसा है ना, जिंदगी ऐसी बदलेगी तुम्हारी आर्म फोर्सेस में अंदर आने के बाद में, एंड इट चेंजेस फॉर गुड, लाइक इट डिड फॉर मी एंड मेनी अदर्स। बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट वॉडकास्ट देख रहे होंगे आजकल तुम लोग। पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स के बहुत सारे पॉडकास्ट आते रहते हैं। मेरे पॉडकास्ट पे खाली पैरा वाले नहीं, ऑल आर्म्स, ऑल ब्रांच, ऑल सर्विसेज ऑफ ऑल थ्री सर्विसेज, सॉरी, सारे स्पेशलिस्ट आकर के बात करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे, आफ्टर यू गेट कमीशन, यू आर एन एवरेज पोटेंशियल ऑफिसर। उसके बाद बाकी की स्टोरी स्टार्ट होती है। सबमरीन में जाना है, मार्को बनना है, पैरा बनना है, फाइटर पायलट बनना है, एमआर पायलट बनना है, चॉपर पायलट बनना है, एयर इंजीनियर जाना है, ब्रिगेड, पैरा ब्रिगेड ज्वाइन करनी है किसी और यूनिट की, पैरा आरटी, पैरा इंजीनियर्स। ये सब सुपर स्पेशलाइजेशन है। पहले एवरेज पोटेंशियल ऑफिसर बनना जरूरी है, एसएसबी क्लियर करना जरूरी है। ठीक है। या आई एम श्योर दैट देयर आर लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो इस वेबिनार में बैठे हैं, बट या विल हेल्प यू प्रिपेयर, एंड द राइट टाइम टू स्टार्ट इज नाउ, अभी के अभी, आज से। ओके। एनी अदर क्वेश्चंस Hema that we want to check? I can see the strength in the webinar is going down.
Yeah, okay, guys. So what we can do is we can end the webinar here in some time. I'm gonna tell you about the course also. There might be definitely there will be a lot of questions that might have remained unanswered. So you have my number. You can still reach out to me with your queries. I will help you out. And for anything, even you are not confident about speaking, reach out to me. I'll help you out. And yeah, as Nikhil sir mentioned, that our sessions always start from 7 a.m. in the morning. And the next batch that is going to start is from 26th of February. We have a lot of WhatsApp groups, and I can see that you don't need to join all the WhatsApp groups. You need to join only one WhatsApp group, and we'll share the content. So after this session also, I'm going to share some content with you, and every day we'll post some content that will be useful for you, for those who are preparing for SSB, and somebody who needs more guidance and more in-depth feedback from all the officers on board. You can reach out to me for the sessions. I'll help you out. And can we move on to the next slide? Yeah. Okay, guys. Uh, we generally have, this is the fees, and we collect 18% GST. But if you register for the batch which Hema said 26 से जो start हो रहा है, 26 Feb से, tomorrow से नहीं, apologies for this. Yeah, we'll take the GST out. That's not a problem. Okay, so anybody who is interested, you guys can reach out to me. I'll help you out. And I've seen a lot of queries, so I'll also try to reach out and help you out. I think that number should change from 20 to 21 now, no? Yeah, now it is Yeah. 20. Yeah. सो ये है कुछ हमारे सक्सेस स्टोरी, 17-18 बार एसएसबी देकर के आए, अभी भी नहीं हुआ, बचपन से ही चल रहा था, एंड ऑल ऑफ दीज पीपल हैव बिकम ऑफिसर्स नाउ, सारे के सारे ऑफिसर्स बन गए. ओके गाइज, या दैट्स इट. शैल वी एंड द वेबिनार? Should I tell all of them? So guys, tomorrow is Nikhil sir's birthday, and I still requested him to, and he still took out time to for this webinar, so that we can try to share some knowledge, and that's why we are ending this today at exactly at 9 o'clock. And any there are a lot of comments coming. You can check in the chat section. And I don't know why Sahil is so happy. He feels like he's dancing. So, Guys, okay. So, thank you so much for your birthday wishes, and I'll be more happy to see you guys become officers. ऑफिसर बनो यार, फौज को जरूरत है तुम्हारी. एंड एक बार फौज में घुस के बाहर निकलोगे ना, जिंदगी ऐसे बदलेगी दैट यू विल से आई कैन टेक द होल वर्ल्ड हेड ऑन. आई कैन टेक द होल वर्ल्ड हेड ऑन. कर्म वही करो जो करना ही फल लगे, क्योंकि कर्म ही धर्म. बस एक ही सेंटेंस में छुपी है पूरी एसएसबी की कहानी. 10 दिन की क्लास में बैठो, एक ही झटके में समझा दूंगा. मैं तो सोचता रहता हूँ कभी कभी, 5,000, 50,000, 5 लाख बच्चे एक जगह कहीं बिठाओ, मेरे को एक एक्सेस दो, 10 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा व्हाट एग्जैक्टली इज एसएसबी. 10 घंटे के अंदर. उसके बाद में कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं होगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उतना कर देना. वो 10 घंटे के अंदर जो सिखाऊंगा, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी तुम्हारी एसएसबी में रेकमेंड होने की. कोई जीटीओ ग्राउंड नहीं चाहिए, कोई रस्सी फट्टा बल्ली नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. मैं जीटीओ हूँ. मेरे को अगर तुमसे जीटीओइंग करवानी है, चेयर पे बिठा के करा लूंगा. ठीक है. दिस इज व्हाट द गेम प्लान इज, दिस इज द गेम. ओके, इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड. ये चाहिए, ये बना देंगे, ये चाहिए. ओके, shall we end the webinar now, Hema? yeah. People are asking me for the WhatsApp group link. Guys, send me a WhatsApp message on my number. I'm dropping the number in the chat section. Just send me a hi and your query. If it is a WhatsApp group link, anything, I'll start replying to you, and I'll help you out. Thanks for attending this webinar. Thanks for your time also, Nikhil sir. Happy birthday to you. Thank you so much, and bye bye, take care. Jai Hind. Shano Varuna. Jai Hind once again.